ચક્રવ્યૂહમાં પ્રવેશવાનું શીખી ચૂક્યો હતો, પણ તે ચક્રવ્યૂહમાંથી બહાર નીકળવાનું શીખી શક્યો ન હતો. અભિમન્યુનું બાળપણ તેના મામાના ઘરે વીત્યું અને ત્યાં જ તેને શિક્ષણ મેળવ્યું. અભિમન્યુ બાળપણથી ખૂબ જ વીર અને બહાદુર હતો. તે વીર જ ન હતો, પણ એકલવીર યોદ્ધા હતો. ચક્રવ્યૂહ ભેદવાનું વિકટ જ્ઞાન તેને હતું. હિંમત, આત્મવિશ્વાસ અને સાહસ તેને. આ દિવસ તેમના બલિદાનને યાદ કરવાનો દિવસ છે. આ દિવસ શીખ સમુદાયમાં ખાસ આરતી, કીર્તન અને લંગર રાખવામાં આવે છે. ઈસવીસન 1704ની આસપાસમાં શીખ સમુદાયના 10મા ગુરુ ગોવિંદસિંહના વીર પુત્રો મુગલ શાસન સામે અવાજ ઉઠાવે છે, ત્યારે તેઓ તેમને જીવતા દિવાલમાં ઝડપી. જૈનિક ધર્મરાશિ છે. હું ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરું છું. મારો વિષય છે લવકુશ. લવ અને કુશ બંને ભાઈઓ હતા. તે બંને રામ અને સીતાના પુત્રો હતા. તેમનો જન્મ रानी लक्ष्मीबाई कहा कि जिस भूमि पर खड़े हो वहाँ के लोगों का उनकी भावना का सम्मान करना सीखो. अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकता है पर मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा का अर्थ माँ होता है और माँ सिर्फ एक होती है. अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. इसीलिए मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से अपनी झांसी की सेवा करूंगी. हम लड़ेंगे और आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का उत्सव मना सकेगी. हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपनों को पुनर्जीवित करेंगे. मैं वो मिसाल बनूंगी जो भारत के हर एक नागरिक के दिल में आज़ादी की आग लहराएंगी. आपको पता नहीं है कि झांसी की रानी जब 9 साल की थी तभी उनकी शादी की गई थी. उनकी शादी धर्म या वर्ग को देखकर नहीं, परंतु देश की सेवा के लिए की गई थी. उनका शरीर बचपन से ही मानव युद्ध के लिए तैयार किया गया हो. आपको ये सुनने में पागलपन लग रहा होगा, परंतु आप जानते नहीं है कि जब झांसी की रानी किसी से मिलती थी तब इसी प्रचार को खोलती थी.